बिल्कुल मजाक बना दी है आप लोगों ने। आपका क्या ब्रीफिंग रहती है, हम दूसरे कोर्ट्स में देखते हैं। जो नहीं नहीं, यू पॉइंट आउट, यू आर अ सीनियर काउंसिल, यू आर Go through the cross and no no sorry, you don't waste our time. If you have not read the file, then don't waste our time. We have 60 cases to do and we cannot waste time like this. I could gauge it, rather we could gauge it very conveniently that you have not read the deposition and you want to read it here. No, I wanted to read the deposition No, of no. W1, sir, because this honorable You court come has to relied on दरवाजा खोला तो मुझे मैडम अपनी इस तरीके से तो हाईकोर्ट का स्टैंडर्ड गिरता ही जाएगा। Yes. आपसे मैंने सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा Because था? the very सवाल क्या पूछा था आपसे? yes sir, जी sir, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का नेक्स्ट पेज पढ़िएगा जी sir, जी। फ्रैक्चर ऑफ मल्टीपल रिब्स ऑन लेफ्ट साइड विद लेसरेशन ऑन ओवर लंग्स। I'm trying to नहीं प्लीज, दिस इज Yes. पार्ट ऑफ द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। Yes, यू विल नॉट रीड पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन पार्ट्स। yes sir, you're right, ये but पढ़िए as ना I say sir, इसको पढ़िए ना, ये दाहिना फेफड़े के बारे में Yes, क्या लिख रहे yes. हैं वो। sir, no, what I am trying to show is that the injuries, following injuries are there sir, there are 5 injuries. Is it your case? Doctor should have been cross-examined that the injury which has been shown to the left-hand side of the ribs and lungs, that was added subsequently. There is no cross-examination. Therefore, we asked you very categorically that No cross. where is the cross-examination? Because it Yes. is not your case that this injury to the lungs and ribs was added subsequently at the instance of the investigating officer. And it is, since it is very much part of the postmortem Yes. report, and we are required to read that postmortem report in toto. We cannot Yes. read it in isolation. Yes. So this argument goes. Next argument बताइए. So it may be that it may be sir that he was not cross-examined, but I can still advance this argument before this No, honorable court we will not, for the simple reason. Sir, because it is part of the. एंड में देख लें, सबसे एंड में देख लें, वहां भी लिखा है इंजरी टू लंग। एंड में लास्ट में भी देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लास्ट में भी लिखा हुआ है। सबसे जहां दस्तखत है वहां भी लिखा हुआ है। Cause of death दिखा रहे हैं, injury to all lung. injuries are anti-mortem. Yes, sir. But as I'm saying, sir, as I'm saying, because after all, the appeal is still an extension. And I would make this submission, so this court may reject my submission or Yes, not. yes. But the fact remains is that these are the 5 injuries in postmortem. ठीक. So I could take advantage of this हाँ, fact. definitely. Yes, sir. Anything. So the client should not suffer for the lapses on behalf of his lawyers. वो भी लिखा देंगे. और बताइए. I think you should not advance this argument with जी, me. नहीं ठीक है कहीं से भी ठीक है. Sir, I tried, sir. Not Court लिखिए. is rejecting Any- that part. Any other argument? Yes, sir, I will go on to the next part. Yes. I will go on to the next part. So the incident has taken place on 26/12 at 12:30 हाँ. a.m. हाँ. Our FIR, which we filed, जी. is at 1:10 a.m. So the court may kindly see I filed the FIR. वो तो काउंटर केस है, पहले 307 का केस आपने दर्ज कराया है। जी उसके सर, बाद जी सर, जी सर. No, sir. उसके बाद आप लोग गए हैं 4 लोग जी. ये कहते हुए कि तुमने हमारे आदमी को क्यों मारा। जी sir. No, sir. That is what I said. I'm pausing. This court may जी. please pause for a minute. जी. Please see the documents which I have filed, sir, along with my. Which application? Yes, sir. First, the FIR, sir, if this court would kindly see it, just for a minute. Page 9, sir, of my एग्जिबिट क्या है आपकी एफआईआर? exhibit 9. बताइए हमारा. वो क्यों बताएंगे? सरकार उनको Sir, I filed it along with my. नहीं, show us the exhibit. Merely filing with your application is not sufficient. And Mr. Manas Mani is not there to assist the private counsel. He is there to assist the court. Sir, but is usually also, we also help them out. आप Sir, बताइए. may I be allowed to read it, sir? That is all. नहीं, If this exhibit court बताइए gives पहले. me that indulgence, I'll read it. Unless you show me the exhibit, we will not allow you to read. Because document which is not exhibited will not be allowed to be All read. right, sir. So I am just, all right, sir. There is a mention जी. in the judgment हाँ. that we have filed an FIR. हाँ. It is 570 of 2016. जी. The FIR which was filed by them is 571. जी. In this FIR, sir, all that we say is, I am not, but since there's a mention about it, judgment, जी. since there's a mention about it in the judgment, जी. the fact that we have filed an FIR immediately after the incident at 1:10, जी. जी. आपका एमएलसी कहाँ है? आपको किस को चोट आई थी जी सर, उस घटना में? जी सर. एग्जिबिट बताइए जी तो सर. पहले. जी, डी में वो- मार्क हुए होंगे ना आपके एग्जिबिट. कहाँ है वो एग्जिबिट?
पहले एग्जिबिट बताइए फिर उनको दिखाइए। जी सर, ये also here there's a mention, paragraph 2 में। नहीं, पैराग्राफ 2 में से नहीं Judgment. पढ़ेंगे। अब एग्जिबिट बताइए कि आपने जब 1:10 पर एफआईआर दर्ज करा जी दी, सर, क्राइम नंबर 570/16, तो उसके बाद में आपका जो मुलायजा हुआ, आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, एमएलसी हुई, उसके एग्जिबिट्स क्या हैं? so there's no mention of anything except for this, sir. I'm extremely sorry, sir. I cannot say anything about or criticize. That we will do. Ji sir, That- that. But sword injuries, 2 sword injuries, sir, it is part of the, as I say, if it is, It is not exhibited. yes, sir, 2 sword injuries on behalf of their father. He got it at Raju Sonkar. कहाँ है? And Chintu filed the FIR जब्ती 570. कहाँ है सोर्ड की? हाँ जी सर। सोर्ड की जब्ती कहाँ है? आपका ये थ्योरी लेके आ रही है कि सेल्फ डिफेंस में मारा, Sir, I'm, तो what सेल्फ I'm, डिफेंस का तो कहीं ग्राउंड ही नहीं लिया sir, आपने। what I'm, sir, it is a ground in that appeal, sir. नहीं, अरे In the appeal. पहले क्रॉस एग्जामिनेशन में प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को सजेशन तो आएगा कि क्योंकि बाबा साहब ने तलवार से मारा था, फलाने फलाने को चोटें आई, जी सर। एग्जिबिट इतना इतना है, इसके कारण स्वयं की रक्षा करने के लिए उन्होंने ईंट और पत्थरों से बाबा साहब को पीटा। सजेशन आना चाहिए और उसका फिर एग्जिबिट होना चाहिए। मैडम आपने जो रिपोर्ट की थी उस पर क्या हुआ? जो जजमेंट जी सर, पेंडिंग सर उसमें unfortunately for the petitioner before this honorable court, they reached a compromise, both parties. And the complainant party in our case compromised, and that case all were acquitted. Even though there was sword injuries. I'm हाँ, नहीं, very ठीक है। candid before हाँ, that. नहीं, that's nice of you. Yes, You I'm cleared being it. very candid. I हाँ। don't want to, I'm not in the habit of. नहीं, that's hiding very good. things. That's very This nice is of what you. happens. जी। अब वो So in this case where they could have been convicted under 307, because there are sword injuries, I've got the MLC report with me, sir, in my file. Sword injuries on their father, 2 sword injuries, and on Chittu, who has been acquitted in this matter, sir, in this appeal. He also had a sword injury. He was the one who filed the FIR 570. लेकिन सेल्फ डिफेंस की प्ली तो बता दीजिए कहीं से पढ़ के कि आपको तलवार से मारा इसलिए So आप may this be पत्थर taken फेंके। up tomorrow, sir. नहीं, नहीं, ये Number सब one. ये सब Or at 2:30, sir? नहीं, नहीं, ये सब नहीं। जी अभी sir. अभी बता I'll go. Yeah, हाँ, ठीक ये है. Anyway, so this is what has happened. I would now like to read the evidence of PW1. PW1, yes. She is the mother of PW2, जी, Sajjan, who had filed the FIR. yes, yes. PW1. मैं न्यायालय में उपस्थित चारों आरोपीगण को जानती हूँ। मृतक किशन उर्फ बाबा सोनकर मेरा भाई था। पिछले साल 26 दिसंबर रात 12 बजे की बात है। मैं अपने बेटे साजन के साथ अपनी पान की दुकान पर बैठी थी। उसी समय मेरे घर के पीछे से हल्ले की आवाज आई तो मैंने अपने बेटे से कहा कि दुकान बंद करो और मैं उठकर घर के पीछे गई तो मैंने देखा कि चारों आरोपी घर मेरे भतीजे करण और अर्जुन के साथ जब्ती कर रहे हैं। सर this is how it started, sir, even for both efforts. जी, जी, Huh? Karan and Arjun were in an altercation with the petitioner and his brothers. जी, जी, मैंने पूछा कि किस बात से झगड़ा हो रहा है तो करण और अर्जुन ने बताया कि आरोपीगण किसी लड़की को लेकर आए हैं, उसी बात पर से झगड़ा हो रहा है। फिर मैं करण और अर्जुन के साथ थाना ओमती उसी झगड़े की रिपोर्ट लिखाने गई थी। थाना पहुंचने के करीब 20 मिनट बाद राजू सोनकर थाने पहुंचे, तब उसके सिर से खून बह रहा था। राजू सोनकर इज माय फादर। हाँ, हाँ, So this substantiates my contention. जी, जी। कि one sword injury was on his head. बताइए ना, क्रॉस में बताइए ना कि तलवार से मारा था। I'll just carry on reading, sir, please. नहीं, ऐसा जनरल मत पढ़िए। नहीं सर, Come to the specific line. हमारी रिपोर्ट मिस्टर काउंसिल, आपने क्या असिस्ट कर रहे हैं मैडम को? आप स्पेसिफिक लाइन बताइए जिसमें कि कहा है, आपने सजेशन दिया है कि राजू सोनकर को इन लोगों ने तलवार से मारा था। शो मी दैट लाइन। नहीं तो हमें लिखना पड़ेगा that assisting counsel are not helping the seniors to prepare the case. उनके खिलाफ कुछ ना हो, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर हो जाएगा। बिल्कुल मजाक बना दी है आप लोगों ने। आपका क्या ब्रीफिंग रहती है? हम
दूसरे कोर्ट्स में देखते हैं जूनियर के फिंगर पॉइंट्स पर, फिंगर टिप्स पर सारे जो है फैक्ट्स रहते हैं, सारी लॉ रहती है। यहाँ डमी के रूप में खड़े होते हैं आप लोग। Sir, may I go to? नहीं, you point out, you are a senior counsel, you are. Go through the cross and this. No, sorry, you don't waste our time. If you have not read the file, then don't waste our time. We have 60 cases to do and we cannot waste time like this. You'll have to, when we ask you a question, then Yes. please pinpointedly say that in this paragraph it has come. I could gauge it, rather we could gauge it very conveniently that you have not read the deposition and you want to read it here. No, I wanted to read the deposition No, of no. PW1, sir, because this honorable You court come has to- you- relied on PW1 you- while dismissing the. You come to the specific point Ji. that PW1 was given So suggestion. all right. Paragraph 2, so this is examination chief. वो Just तो पढ़ one लिया हम, paragraph. वो हमने पढ़ लिया। आप तो मुझे वो जी। स्पेसिफिक So लाइन बता दी। may I come straight to paragraph 6? हाँ, पैराग्राफ 6 जी। ये बात सही है कि मेरे मकान के बाजू से आरोपी घर का मकान है। ये बात भी सही है कि अन्य परजातों के मकान भी मेरे मकान के बाजू से लगे हैं। मैंने पुलिस को बयान देते समय ये बता दिया था कि रात करीब 4 बजे चारों आरोपी घर मेरे घर आए और हमारे घर के दरवाजे में लात मारने लगे। मैंने दरवाजा खोला तो मुझे मैडम, अपनी इस तरीके से तो हाईकोर्ट का स्टैंडर्ड गिरता ही जाएगा। आपसे मैंने सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा था आपसे? यस सर, सवाल ये पूछा था जी। कि आपने PW1 को कहाँ सुझाव दिया कि पहले राजू को या अन्य किसी एक्यूज पार्टी के सदस्य को कंप्लेनेंट पार्टी द्वारा तलवारों से मारा गया, उसके बाद अपनी डिफेंस में उन्होंने ईंट और पत्थर वहां से उठाकर फेंके। ये सवाल मैंने आपसे, अगर आप नहीं सुनना चाहते तो बात अलग है। हमारे कोर्ट में इस तरीके से कृपा करके मत आइए बगैर तैयारी के, और ये डमी जूनियर्स मत लाइए जो कि जिनको केस के बारे में ABCD नहीं मालूम है। लिखिएगा, when this court asked Srimati June Chaudhary, learned senior advocate, to show from record that there is any suggestion to the witnesses that firstly, injuries were caused to the accused party with swords, and as a result of which, and as a measure of self-defense, stones and bricks were thrown on Kishan Baba Sonkar. Then instead of answering pinpointed query of this court, Ms. June Chaudhary started reading complete deposition of PW1. Next paragraph. When this court pointed out that in internal page 2 of the internal page 4 of the postmortem report, it is mentioned that there were fractures of multiple ribs on left side with laceration over lungs, and blood was present in pleural cavity. Then she submits that it is not mentioned in the 5 injuries which are shown on the page number 3 of the postmortem report. Full stop. Then we pointed out that even in the opinion, it is mentioned that the cause of death in this case is shock due to excessive blood loss, which may have occurred due to injury to major bones, and there is a mention of injury to lung. It is submitted that in any case, omission to mention it among injury to lungs in the first 5 injuries mentioned on internal page 3 will gloss over the mentioning of the injury to ribs and lungs on internal page 4 of the postmortem report. Next para. We are respectfully in disagreement with this submission. Next. We have also noted that there is no cross-examination on the postmortem doctor. Full stop. We have also noted a fact that when we asked Mrs. June Chaudhary to point out from the record that any exhibits were marked and prosecution witnesses were subjected to cross-examination on the basis of said exhibits being the MLC reports of the accused party, then it is fairly submitted that in crime number 570/2016, parties had entered into a compromise and all the accused persons were acquitted. Full stop. It is further submitted that
a case where complainant party could have been convicted under section 307 IPC was compromised, and therefore admittedly there are no documents showing MLC of the accused party, nor there is any suggestion. However, since Mrs. June Chaudhary is not ready with the specific queries of this court, case is reluctantly adjourned. List after 4 weeks. Chali, next case. Sir, may I make a small mention? Ji. If my name may not come so many times in the order, sir. Huh? My Kya? name may not come so many times in the order, sir. Are? Nice, sir. I Chaliye. would respectfully submit. चलिए कोई बात नहीं. जी. Next case.